Good morning and assalamu alaikum, my students, my fellows. How are you? Hope you fine, and I'm sure that you are busy in your study in our routines days. Okay, so today our topic to relate our previous lecture, letters and applications. So please see my lecture, letters and applications, and then we relate our today next lecture, writing an application in a easy way and writing an application in a outstanding way. Okay, so let's see, and I want to share a easy way and a outstanding method for application writing. So let's see. Firstly, we only study applications, both of, okay, and then we discuss. So the principal, Government College, Lahore, city ABC, and excuse me, here is, I think, fly, so that irritates me. Yes sir, I am student of intermediate. I took up Urdu as subject of my studies at a time of admission, but now I want to take up English in place of Urdu, and you are requested to allow me to change the subject. I thank you in advance. Your obediently XYZ, and dated to. Yes. And then the principal, Government College, Lahore. Are you seeing, students? So are you seeing? Okay. Yes. And the principal, Government College, Lahore, Honorable Sir, most respectfully, it is stated that I am students in your college, and the college offered 7 optional subjects. At a time of admission, I wanted to take up English as a subject of my study. And that's time, unfortunately, there was no professor of English in our college. Therefore, I took up Urdu as one of optional subject. But recently, our professor of English has joined our college. Now, I want to take up English in a place of Urdu. My Urdu teacher is a good in a lecture Urdu, but my favorite subject is English. So, I request you to allow me to change the subject. So, dear sir, so dear sir, I assure you my best performance in a future in my subject.
in my English subject. Okay, and I hope that you would take my application into your kind consideration, thanking you in advance. Your obediently XYZ. So let's see. Firstly, what's the difference? Easy, easy writing, and then outstanding. Outstanding or outstanding. But here is I write standardized application and not much outstanding, because I know that's so. Firstly, sir, that you are watching, sir, here is and there. Okay, students, sir and honorable sir. Okay, here is simply sir, that's a honorable sir. Here is a give to respect to sir. Okay, and then I am student of intermediate, so it's a direct conversation. Okay, so here is most respectful, most respectfully. Okay, most respectfully it is stated that I am student in your college. Firstly, यहाँ most respectfully it's सब यहाँ पे application conversation क्या है, with the respected and the honorable way. Okay, students, because here is a honorable and respected wording. It's a best collection of words for honors. जिसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रही हैं उसके लिए वर्ड कलेक्शन जो है इट्स अ बेस्ट वे, अंडरस्टैंड. एंड देन ही शेयरिंग दैट्स आई एम स्टूडेंट इन योर कॉलेज. इट्स वेरी सिंपल एंड इन अ शॉर्ट फॉर्म. यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो सिर्फ क्या है, इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो चेंज करना चाह रहा है अपना उर्दू सब्जेक्ट रिप्लेस पे, बिकॉज यू वांट टू इंग्लिश. बट हियर इज़ नॉट वो एक्सप्रेस इन explanations, his conversations and his details. Okay, here is not explanation. स्टूडेंट वो एक्सप्रेशंस जो हैं उसके एक्सप्लेनिंग यहाँ पे उसने नहीं की. क्यों कर रहा है, क्यों चाहता है, बस दैट्स इट्स. उसने लिखा है मुझे ये इंग्लिश सब्जेक्ट जो है आई वांट टू चेंज टू उर्दू प्लेसमेंट पे. सो बट हियर इज़ यहाँ पे उसने फर्स्टली जो है ऑनरेबल जो है तो वो बात कर रहा है रिस्पेक्टेड वे में, एंड देन हर कन्वर्सेशन मेथड इज़ इन एक्सप्लेनेशंस वे. उस पर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, वहाँ पे अपनी यहाँ पे वो रीज़न्स जो है वो शेयर कर रहा है, उसकी क्या रीज़न है. तब उस वक्त जो है
क्या था, प्रोफेसर्स नो अवेलेबल इन अ कॉलेज, सो इट्स इसलिए उसने उर्दू सब्जेक्ट चूज़ किया उस टाइम। देन इसने यहाँ पे वो शेयर किया, ठीक है। एंड देन वो व्हाई इज़ ही चूजिंग इंग्लिश, हेयर इज़ नॉट, यहाँ पे उसकी चॉइस क्यों है, इज दैट हेयर इज़ नॉट explanation, but here is explain because that's a favorite subject, English is his a favorite subject। यहाँ पे वो रीज़न जो है ऑथेंटिकली जो है वो बता रहा है, शेयर कर रहा है कि बिकॉज English is his favorite subject, so he want to change Urdu subject, and he sharing somewhere कि my Urdu teachers, ऐसा नहीं कि जो है मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि वो उर्दू टीचर्स जो हैं वो उर्दू सही नहीं करवा रही, बिकॉज उर्दू टीचर्स बेस्ट टीचर्स एंड बेस्ट लेक्चरर, बट उसका इंटरेस्ट क्या है, बिकॉज वो फेवरेट है उसकी इंग्लिश, सो इसलिए जो है उसको चेंज करना जा रहा है। यहाँ पे उसने इसको एक्सप्लेन करके बताया है, शो किया है, ओके। एंड देन आप इसमें देख रही हैं सब्जेक्ट डियर सर, यहाँ पे वो बात कर रहा है किस तरह, इन अ हम्बल वे, ओके। डियर सर, आई श्योर यू बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ फ्यूचर इन माई इंग्लिश। सो in this application, words collections, words in a best way, vocabulary, so it's a standardized or a outstanding application, and it's best for you, and remember always, okay students, your diligence and dedications will give you a reward in your future, okay। हमेशा याद रखें कि आप diligent हैं, diligent students हैं, and because it's a law of nature कि मेहनत और लगन जो है आपको फ्यूचर में इसका रिवार्ड ज़रूर देगी, बिकॉज इट्स अ लॉ ऑफ नेचर, ये फितरत का असूल है। सो प्लीज़ ओनली फोकस योर स्टडी एंड स्टैंडर्डाइज स्टडी in a standardized study. So thank you so much, and so please subscribe and comments me and sharing me your any problems, and see my lectures for you in a special way, but my every lecture is special for you, but it's a very important for you for exam studies, easy lecture for you, my lectures. So please see my videos, and thank you so much once again. Okay, see you.